वी हैव टॉक टू मैनी टीचर्स और हमें पता चला है कि अभी टीचर्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव होमवर्क को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि दे सेंड द PDF ऑन व्हाट्सएप एंड दे गेट ऑल द PDFs ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लेट्स से 50 स्टूडेंट्स है अगर उनके पास, तो 50 PDFs उनको वापस मिलता है व्हाट्सएप में. they'll have to download and then open it and check one by one. It's a lot of hassle for the teachers, and therefore we have developed the subjective feature in Dojo. Now let's suppose आप 6.3 से आप 6 क्वेश्चन देना चाहते हैं जिसमें से 3 सब्जेक्टिव हैं 3 ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स क्लिक दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव देना चाहते हैं. यू विल सी अ स्मॉल टॉगल सब्जेक्टिव का आपको दिख रहा होगा ऑन ऑफ करने का. व्हेन यू क्लिक सब्जेक्टिव बटन you will see that students will have to upload handwritten solution. So you click here OK and then आपका ये question subjective हो गया. Now you have 6 questions, you preview them, you can see the first 3 questions are subjective, the last 3 questions are objective, and now you just have to send the worksheet to the entire class. Now all the 5 students have automatically sent this worksheet instantly, which you can see from here itself. Lines and angles, easy है worksheet का difficulty level. 5 students, due date 1st of February 2022. Now I'll show you exactly how student can attempt this particular homework. Now as you can see, there is a class 9th maths है, and the teacher's name is Ashish. You click here and यू सी देयर इज़ अ लाइन्स एंड एंगल्स का बहुत सारे पेंडिंग है, बहुत सारे नॉट सबमिटेड हैं. वी विल डू द क्लास लाइन्स एंड एंगल्स वाला होमवर्क. क्लिक दिस एंड यू विल सी इट इज़ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड स्टूडेंट विल हैव टू अपलोड द आंसर. नाउ क्लिक ब्राउज फाइल्स. ओके, नाउ लेट्स सपोज हियर इज़ योर, फॉर एग्जांपल हियर इज़ योर handwritten solution. Students can add more as well from the gallery or the camera. Here I am using camera. Any image right now I am using just a random image. Okay, it's a paper cutting. And now click submit. As soon as they submit, they can see the solution. As soon as it is submitted, you will see that subjective questions are unchecked. When the student opens it, they'll see that your teacher is yet to check the answer. Okay, they can see their submissions as well. They can zoom in. Okay, and now teacher will have to check this particular answer. Now I'll show you how a teacher checks. Here you will see Ashish has submitted on 22 of January. Okay, when you click this, you will see subjective questions आपको check करने हैं. You just enter here. You will see the submission that Ashish has done for the subjective question. Answers, for example, अगर गलत है, so you mark cross and Ashish will be notified of this checking and यहाँ पर इसका status भी change हो जाएगा. अगर इस question का आंसर so आप tick mark कर सकते हैं and Ashish will be notified instantly. So this is how subjective feature is maintained. You give subjective questions. Student will have to upload the answer and then you check and everything is stored in one place. No need for WhatsApp में PDF भेजने का, PDF बनाने का झंझट वगैरह, सब कुछ ख़त्म हो जाता है.